Okay, so I'll share the screen so that we can start with reading first. We still have 1 more minute. So after that, we'll start with reading. लास्ट टाइम हमने जय तक लिया था, जय ने लास्ट रीड किया है. उसके बाद we are going to start today from Kadambari. Kadambari, are you there in the lecture? Yeah, very good. Please switch on your mic. Yes. Yes, please start reading from soil pollution. Ma'am, screen is not visible. Is it not visible? Okay. Is it not visible for all? Because I have started. No, reading Yes, Kadambari. reading page is not visible. Okay. So, is it visible now? Yes, visible. Okay, very good. Please start reading. Soil pollution is a result of acid rain, polluted water, fertilizers, etc. In short, this occurs when chemicals are released into the soil. Light pollution includes use of excessive lighting equipment. The excessive and inappropriate artificial light cause several inappropriate artificial light causes several phenomena that decrease visibility and cause visual discomfort like Glare. urban sky glow 2. Glare, urban sky glow 2, and light trespass. Light pollution is a great hindrance to astronomy as it has become increasingly difficult to view the night sky because of interference from artificial light. Okay, very good. You can switch off your mic now. Next one in the list is Lavanya. Lavanya, are you there in the lecture? Yes, ma'am. Very good. Yes, please start. Adventure. Adventure sports or extreme sports are recreational activities that are known to involve a high degree of risk. This risk could be in the form of speed, height, or a high level of physical exertion and involve Exertion. the use of exertion and involve the use of highly specialized sports equipment. Hence, adventure sports require skills and physical prowess. These sports are usually competitive in nature. These are bold undertakings that involve hazardous action and their outcome is almost always uncertain. Okay. Okay, you can stop. You can switch off your mic now. Very good. The next one in the list is Laksh. Are you there in the lecture? Laksh. Laksh. Okay. Next, Maitreya. I guess Maitreya is also not there. Okay. Next one is Nandini. Nandini, please switch on your mic. Yes, She ma'am. was there. So yes. Okay, very good. Please start reading. Opera. Ma'am, from where? Opera refers to a dramatic art form. Is the screen visible? Opera refers to dramatic art form originating in Europe in which the emotional content is conveyed to the audience as much though music, both vocal and instrumental, as it is though the lyrics. By contrast,
In musical theater, an actor's dramatic performance is primary and the music plays a lesser role. The drama in opera is presented using the primary elements of theater such as scenery, costumes and acting. However, the words of opera or libretto are sung rather than spoken. The singers are accompanied by the musical ensemble, Symbol. um, ranging from a small instrumental ensemble to a full symphonic or orchestra or Orchestra. 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 Very good. Perfect. You can switch off your mic now. The next one in the list is Om. Yes, ma'am. Yes, dolphins. Read from dolphins. Dolphins are regarded as the friendliest creatures in the sea, and stories of them helping drowning sailors have been common since Roman times. The more we learn about dolphins, the more we realize that their society is more complex than people previously imagined. They look after other dolphins when they are ill, care for pregnant mothers, and protect the weak in the community, as we do. Some scientists have suggested that dolphins have a long language, but it is much more probable that they communicate with each other without needing words. Could any of these mammals be more intelligent than man? Certainly, the most common argument in favor of man's superiority. Ma'am, 2 minutes. Okay. Over them that we can kill them more easily than they can kill us in the least satisfactory is the least satisfactory. On the contrary, the more we discover about these remarkable creatures, the less we. You can stop now. Very good. Perfect. Thank you, ma'am. आता पुढचा एक घेऊया आपण पल्लव. If he is there in the lecture, Pallav, are you there in the lecture? Then please switch on your mic immediately. Okay, he might not be there. सो एवढ्यांचे आपण आतापर्यंत रीडिंग घेतलेलं आहे. पल्लव पर्यंत आपण आलोय. पल्लवचं झालेलं नाही आज. नेक्स्ट लेक्चर मध्ये प्रार्थना, ऋषी, वैष्णवी, वेदांत हे लिस्ट मध्ये आहेत. ओके. आज आता स्पीकिंगच्या लिस्ट मध्ये प्रार्थनाचं नाव आहे. प्रार्थना, लास्ट टाइम तुझं स्पीकिंग झालं नव्हतं ना? प्रार्थना, आर यू देअर इन द लेक्चर? नो, आय गेस शी इज. Tanvi, your name is last in the list because it's T, right? We have arranged the list alphabetically. Okay, so are you ready for speaking in today's lecture? तुझं नाव असं फर्स्ट स्पीकिंग साठी येईल. आपण एंड लिस्ट पासून स्पीकिंग स्टार्ट केलंय ना, सो तुझं नाव एंडला येतंय तर ते स्पीकिंग मध्ये जाईल ऑन एनी टॉपिक ऑफ युअर चॉईस. Okay. Very good. So we'll take your speaking in at the end of the lecture in last 5 or 10 minutes. Is it fine for you? Or you want to speak right now? Okay. So we will start with the debate then. डिबेट के लिए हम लोग टॉपिक लेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन क्लासेस. ये टॉपिक होगा. ओके, आई विल राइट डाउन द टॉपिक इन द चैट बॉक्स. एडवांटेजेस एंड ओके, तो ये आपका टॉपिक रहेगा. आपने पहले कभी किसी डिबेट में पार्टिसिपेट किया है? डिबेट कैसे जाता है किसी को पता है कुछ? राइट समथिंग इन द चैट बॉक्स. यस और नो विल डू.
ओके, किसी ने नहीं किया, नो प्रॉब्लम। ओके, तो मैं पहले बता देती हूँ डिबेट कैसे होता है। डिबेट मतलब इन शॉर्ट आपको जो सामने वाला बोल रहा है उसके खिलाफ कुछ बोल के आपका पॉइंट प्रूव कर देना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम दो टीम्स बनाएंगे, एक टीम होगी पूरी गर्ल्स की और दूसरी होगी बॉयज की। तो अगर गर्ल्स एडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन क्लासेस पे बोल रही है और बॉयज डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन क्लासेस पे, तो एक लड़की ने अगर ऐसे कहा, फॉर एग्जाम्पल लावण्या है, लावण्या ने ऐसे कहा कि ऑनलाइन क्लासेस के एडवांटेजेस में ये आता है कि हम लोग आराम से बैठ के घर पे बैठ के क्लास अटेंड कर पा रहे हैं और हमें कहीं दूर जाना नहीं पड़ रहा। तो उसके ऊपर डिसएडवांटेजेस में कोई लड़का ऐसा ऐड कर सकता है कि हम लोग जब घर के बाहर जा रहे थे, हम लोगों को हमारे दोस्तों से मिलने का मौका मिल रहा था, जो अभी ऑनलाइन क्लास घर पे बैठ के हमें नहीं मिल रहा। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट लड़की के पास जाएगा ये बोलने के लिए। एक बार एक लड़के ने बोला, उसके बाद लड़की के पास जाएगा, फिर दूसरी कोई लड़की बोलेगी। फॉर एग्जाम्पल अभी लावण्या ने पहले स्टार्ट किया है, तो कादम्बरी ऐड करेगी कि इट्स ओके, तो फिर हमें अगर दोस्तों से ही मिलना है तो फिर हम लोग कभी प्लान करके मिल सकते हैं बाहर, लेकिन पढ़ाई घर पे बैठ के अच्छे से होगी। वहां पे थोड़ा अगर टाइम पास हो रहा होगा दोस्तों के साथ तो वो कम हो जाएगा और हम घर में बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। ये उसका पॉइंट हो जाने के बाद अगर किसी लड़के को ऐड करना है तो ही कैन ऐड दैट घर पे बैठ के भले ही हम लोग कंफर्टेबली देख रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, लेकिन नेटवर्क का इशू हो सकता है, किसी के पास स्मार्टफोन ना हो तो वो इशू हो सकता है, तो उसका क्या करेंगे, इसके ऊपर लड़कियां अपना कुछ बयान देगी। इन दिस वे द डिबेट शुड गो। ओके, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ने पूरी एडवांटेजेस की लिस्ट बोल दी, दूसरे ने पूरी डिसएडवांटेज की, ऐसा नहीं है। सिर्फ एक पॉइंट पहला कोई इस्तेमाल करेगा विच कैन बी एडवांटेज और डिसएडवांटेज डिपेंडिंग ऑन योर ओन थॉट्स। ऐसा एक्चुअल डिबेट में होता है, बट हम लोग दो ग्रुप कर रहे हैं और दो ग्रुप हमें यहाँ पे इजी जाएगा कि गर्ल्स एंड बॉयज करना है, तो इसलिए एक प्रैक्टिस सेशन होगा आज का हमारा। तो इसमें क्या होगा कि गर्ल्स अगर एडवांटेज के बारे में बोल रही है, तो किसी ने अगर स्टार्ट किया ऑनलाइन क्लास के एडवांटेज के ऊपर बोलना, तो जो बॉयज में से पहला सेंटेंस बोलेगा उस पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गर्ल ने जो एडवांटेज बताया है उसी हिसाब से डिसएडवांटेज बताना है। गलत कैसे होगा मैं एक बता देती हूँ आपको, गलत का एग्जाम्पल बता देती हूँ। अगर गर्ल ने स्टार्ट किया है कि घर पे बैठ के हम आराम से पढ़ पा रहे हैं और रिकॉर्डेड लेक्चर्स रिकॉर्ड करके भी हम लोग सुन पा रहे हैं, और बॉय ने किसी ने अगर ऐसा बोल दिया बीच में से ही कि पर उसकी वजह से हमें मतलब ऐसे आंखों का वगैरह तकलीफ होती है, तो दो चीजें मैच नहीं हो रही है कहीं पे। ओके, सो एक पॉइंट पे दूसरा कंटिन्यू करेगा और उसका जब पूरा हो जाए तो उसके ऊपर लड़की कुछ बोलेगी और वो कुछ ऐड कर सकती है। मतलब ऐड करते जाना है आगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पॉइंट पे बोलते जाना है, ऐड भी करना है, लेकिन वो उस सीरीज में ऐड करना है। ओके, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, जब भी कुछ ऐसा बीच में आ जाएगा मैं बता दूंगी कि आपका पॉइंट थोड़ा मिस हो रहा है या फिर करेक्ट जा रहे हो आप। ये सीरीज में हम लोग कैसे ऐड कर सकते हैं, ये भी एक स्किल है कि एक पॉइंट को कंटिन्यूएशन में लेके हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो हम लोग कैसे ऐड करेंगे, क्योंकि अगर कुछ ऐड ऑन नहीं करते गए तो वो डिबेट आगे चलेगा ही नहीं। राइट, एक ही पॉइंट पे सबको नहीं बोलना है, एक एडवांटेज उसी से लेके दूसरा डिसएडवांटेज, और उसके बाद जब लड़की की फिर से बारी आएगी तो उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी दैट शी हैज टू ऐड सम पॉइंट इन दैट डिबेट। इज इट क्लियर? सबको पता चल गया थोड़ा सा तो? एटलीस्ट 10% जो मैंने अभी बोला उसमें से। वेरी गुड। नाउ you have two choices. Either you will write the name in the chat box that who wants to speak next or who wants to add some points, or the second option is मैं आपके नाम call out करूंगी। What is preferable for you? दोनों के डिसएडवांटेज एडवांटेजेस है, बट पहले बता दीजिए कि आप लोगों के लिए क्या प्रेफरेबल है, मैं आपके नाम कॉल आउट करूं या फिर आप खुद का नाम चैट बॉक्स में लिखोगे जब आपको बोलना है। यू विल राइट योर नेम्स, ऐसा प्रार्थना का कहना है।
सबका वही है, सब लोग प्रार्थना से सहमत है? वेरी गुड। इसमें सबको ये बात याद रखनी है कि सिर्फ 2-3 लोग बोल रहे हैं और बाकी के लोगों ने नाम नहीं दिए। कादम्बरी अभी 1-2 मिनट सिर्फ। यस, विल स्टार्ट। मैं जब स्टार्ट बोलूंगी तब हमें शुरू करना है। ये बात याद रखिए कि कुछ 2-4 लोग ही बोलते हैं और बाकी के चुप बैठ के सब कुछ सुन रहे हैं या फिर लेक्चर चालू रख के कुछ और कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए, सबको पार्टिसिपेट करना है। इट्स नाउ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, आपने कॉल दिया है कि मैं आपके नाम कॉल आउट नहीं करने वाली, आप खुद से लिखने वाले हो। तो मैं छोड़ के जो 16 पीपल है उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि खुद का नाम वहां पे ऐड करेंगे। और मैं देखती जाऊंगी कि जब मतलब गर्ल्स की टीम की जब बारी होगी तो गर्ल्स बोलेंगी, गर्ल में से किसी का नाम आएगा, और बॉयज की टीम की मतलब डिसएडवांटेजेस की बारी आएगी तब बॉयज में से नाम दे देना। मैं पहला नाम जिसका आएगा वो सिलेक्ट करूंगी और उसके बाद जब नेक्स्ट पॉइंट आएगा तो फिर जो दूसरा नाम होगा उसे चांस मिलेगा। ओके, इसके हिसाब से मैं ये भी देखूंगी कि सबको चांस मिल रहा है या नहीं। इज इट क्लियर नाउ? सब रूल्स पता चल गए आपको? ये बेसिक रूल है कि हमें एक सीरीज में, एक लाइन में जाना है, एक फ्लो में जाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ने एक ऐड किया और दूसरे ने कुछ और ही बोल दिया। गर्ल्स आर गोइंग टू स्पीक ऑन एडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन क्लास, that how it is helpful than offline classes, and boys will be speaking on disadvantages of online classes, that how it is not as good as offline class or your normal lectures. Okay, is it fine for all? गर्ल्स के लिए एडवांटेजेस बोलना फाइन है और बॉयज के लिए डिसएडवांटेजेस। वेरी गुड, परफेक्ट। सो नाउ वी विल स्टार्ट। अब गर्ल में से कोई अपना नाम भेज दीजिए। कादम्बरी। ओके, कादम्बरी, प्लीज स्विच ऑन योर माइक एंड स्टार्ट एंड ओपन द टॉपिक फॉर डिस्कशन। In online class, we can study at our home. Okay, so that was her point, that we can study at our home. इसमें कौन से लड़के को कुछ ऐड करना है? मतलब इसके अपोजिट कुछ बोलना है? कुछ तो दिमाग में आ गया होगा ना कि उसने ऐसा बोला कि इन ऑनलाइन क्लास वी गेट चांस टू स्टडी एट अवर होम। किसी को कुछ नहीं बोलना? इतने सारे लड़के हो, कुछ ना कुछ तो आया होगा दिमाग में जब उसने ऐसा बोला कि वी कैन स्टडी एट अवर होम। नाउ इन दिस केस हमने 2 ग्रुप बनाए। अगर आपको ये एडवांटेज लग रहा है तो भी ठीक है। व्हाट यू कैन से इन दिस केस? ओके, अथर्वा, यस, प्लीज स्पीक। But we can't meet our friends. ओके, सो अभी अथर्वा ने ऐसा बोला कि हम लोग घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन वी कांट मीट अवर फ्रेंड्स। ट्राई टू स्पीक एटलीस्ट 2 to 3 लाइन्स। सिर्फ एक लाइन बोल के खत्म मत कर दीजिए। ओके, भैरवी, प्लीज ऐड। But in current situation, I don't think it's necessary to meet our friends because we all know that the demon named Corona is roaming, and I don't think it's necessary to meet our friends at this time. It is not safe for all of us. ओके, वेरी गुड भैरवी। नेक्स्ट, किसी लड़के को कुछ बोलना है? कादम्बरी, अथर्वा और भैरवी हो गए। अथर्वा के बाद किसी लड़के को कुछ कमेंट करनी है? जो भैरवी ने अभी बताया कि इट इज नॉट नेसेसरी राइट नाउ इन दिस सिचुएशन टू मीट अवर फ्रेंड्स, बट टू बी सेफ इज इम्पोर्टेंट। यस जय, प्लीज स्पीक। Ma'am, but we can wear mask and we can sanitize our hands at least after some minutes, and we can meet our friends. Okay, so Jay's comment is that we can meet our friends by wearing a mask and using a sanitizer. That is all precautionary measures that we can take. Lavanya, yes, please. It helps to make distance and also we are able to study. Yes, it's the point of our online teaching, that by online class we can stay at our home, we can follow social distancing, and we can also study.
बट एक मुझे पॉइंट ऐसा ऐड करना है जो भैरवी आपने कहा उसके हिसाब से, इफ कोरोना गोज, इफ देर इज नो कोरोना नाउ इन द वर्ल्ड, ऐसे सिचुएशन में हम लोग ऑनलाइन क्लास प्रेफर करें या फिर हमारा नॉर्मल टीचिंग? नॉट ओनली भैरवी, गर्ल्स के लिए ये पॉइंट मैंने एक ऐड कर दिया बॉयज की तरफ से। ओके कि अगर कोरोना चला गया तो फिर आपकी क्या राय होगी कि ऑनलाइन क्लास होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? ओके तो अभी कोई बॉय बोलेगा, क्योंकि लावण्य ने उसका पॉइंट ऐड किया है, तो कोई लड़का हु वांट्स टू स्पीक, एनी बॉय फ्रॉम द लिस्ट, you can add your own point that as Lavanya said, in this time we can have social distancing and also without failing to study, the study can keep on going. So anyone from boys list wants to add? Yes, very good. Ayush, please speak. He added his name and left. Okay. Atharva again. Okay, no problem. You can speak. Yes. Online student feedback is limited. Your voice was not clear, Atharva. In online class, student feedback is limited. Okay, limited as in what you want to say? Interaction. Okay, interaction is limited. Yeah, in offline class, we can interact more clearly than in online lectures. Right. So this is the point given by Atharva, that interaction is less with online classes. Is it true, or there is some another option that we can add? Girls can speak in these lines. That whether it is limited, interaction is limited, or like we can use some software or something which can add up that will make it more interactive. In these lines, girls can add. Bhairavi, yes, okay, please start. Though I agree that interaction is less in online classes, but I think teachers are able to explain us very well because of videos which they use and other sources through which they teach us. So I think it's very helpful to us. Okay, Ayush, yes, please speak. But some students are live in village and they haven't some internet. Then Okay, I guess he has network issues at his end because his voice is not clear now. आता जय आणि द्विजेश दोघही जण एका लाईन मध्ये आलेत. जय, तू एकदा बोललायस ना, तर आधी आपण द्विजेशला चान्स देऊया, मग परत जयला देऊया. द्विजेश, प्लीज यू कॅन ऍड. Ma'am, the teachers were used to teach practically, and that is not seen in online classes today. ओके सो जस्ट अ मिनट. भैरवी ने ऐसे ऐड किया था कि हम लोग मतलब टीचर्स आपको कुछ वीडियोस दिखा रहे हैं और उनके थ्रू आपको समझ में आ रहा है, मतलब समझा जा सकता है. द्विजेश का ये पॉइंट है कि जो प्रैक्टिकली सामने दिखा रहे थे टीचर्स, वो अब हम लोग नहीं देख पा रहे हैं. ओके सो यहाँ तक अभी तक हमारा डिस्कशन आ गया है. इसके बाद गर्ल्स को कुछ ऐड करना है द्विजेश के पॉइंट में. तन्वी, अविघ्ना और कौन लड़की? आई गेस अविघ्ना इज नॉट देयर टुडे. नंदिनी, प्रार्थना. Nandini, very good. Please start. Ma'am, which we see in practically original classes, but in online classes we understand more, and in original classes teacher tries us to understand but something we understand, and in online class we sit at home and we can understand it.
ओके, वेरी गुड। ये नंदिनी का पॉइंट था कि हम लोग घर पे बैठ के उसे अच्छे से कुछ देख पा रहे हैं। टीचर अगर प्रैक्टिकली दिखा रहा है, पर वो टीचर को भी यूट्यूब पे वीडियोस दिखाना स्कूल में पॉसिबल नहीं था, या फिर वो थोड़ा हर्डल वाला था, लेकिन अब स्क्रीन शेयर करके डायरेक्टली यूट्यूब से वीडियो भी टीचर्स दिखा पा रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए एडवांटेजेस है। परफेक्ट। नेक्स्ट ओम। ओम के बाद जय, मैं तुम्हें मौका दूंगी। ओम, प्लीज स्पीक। Not even the best online course can fully replace the personal contact with teacher or the human relationships that develop in a group. ओके, तो ऑनलाइन टीचिंग से जो टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन होता है वो प्रॉपरली ऑनलाइन में से नहीं होगा, ऐसा ओम का कहना है। अब इसमें किसी गर्ल को कुछ कहना है? गर्ल्स टीम में से कोई? यस, स्टूडेंट टीचर का इंटरेक्शन, वेरी गुड। प्रार्थना, प्लीज स्पीक। Interactions now is not more important than our lives. ओके, सो अभी आपका ये कहना है कि कोरोना के हिसाब से जो चल रहा है वो अच्छा है, लेकिन जो भैरवी ने पॉइंट ऐड किया था सिमिलर लाइंस पे, मैं उस पे एक ऐसा बोलती हूँ कि अगर कोरोना चला जाता है तो ऑनलाइन लेक्चर्स अच्छे हैं या ऑफलाइन, ऐसे भी लाइंस पे आप सोच सकते हो। तो आगे का पॉइंट बॉयज जब ऐड करोगे, प्रार्थना ने पॉइंट सही बोला है कि द इंटरेक्शन इज नॉट एज इम्पोर्टेंट एज अवर लाइफ. So in this period, life is more important. Therefore, online teaching is more important in this corona period. Okay, so जो मैंने अभी पॉइंट ऐड किया है वो दिमाग में रख के कुछ ऐड कर सकते हो. तो जय, प्लीज स्टार्ट. प्लीज स्विच ऑन योर माइक. Yes, Jay. Yes, ma'am, but we for a minute. Your voice is not clear. Ma'am, but we can, yeah. But ma'am, we can, if there is no corona, then we can go to schools, and in online lectures, all are not having smartphones and Androids. All are not having internet connection at their home. Some students are not getting proper education by online classes. Okay, very good. So Jay's point of view was this, that after corona we can go to school and we can have that interaction. Plus there is this point that everyone is not using cell phones or not having proper internet connection, or the range that comes to the range cannot come in some villages. So what about that? Any girl student wants to add something? Girls, Tanvi, you have not spoken yet. बॉईजचीच नावं आता खूप यायला लागली. पुढे जयच्या नंतर आयुष, वेदांत आणि ओम तिघ जण वेटिंग लिस्ट मध्ये थांबलेत, आणि मुलींपैकी मला अजूनही एकही नाव नाही दिसत आहे. Someone please add your name. Lavanya, very good. Please speak. It makes each and every student concentrate and avoid any indiscipline in the class. Okay, so you are saying that online teaching, because of online teaching, there is no indiscipline in the class, right? So that's what you wanted to say. Now, very good. So anything against this by Vedant? ओम, तुला नंतर चान्स देते मी, आधी वेदांतला बोलू दे, त्याचं नाव दोनदा येऊन गेलं. वेदांत, प्लीज स्पीक. Yes, ma'am. Ma'am, but we have to open our hearts. Means while staying home, we can't get outside because our mother is not allowing because of coronavirus. When the coronavirus will end, as you said, that offline is good, I think, because we can roam freely in class, or means during off period, not during means when teacher is teaching. I'm saying that. Okay, so according to you, when corona gets over, it is beneficial that offline class or your normal schools are good than online classes. Okay, so आता ह्याच्या पुढे मुलींना काही ऍड करायचंय? नंदिनी, yes, please add.
Ma'am, because if corona goes, then also in class sometimes the backside the voice is coming, so when the teacher explains that we can't understood, but online class there is always discipline, so we we understand our teachers what teachers are explaining, but in offline we can't get that discipline which get in online classes. Okay, perfect. Next one. Bharat, are you okay? Now I'll give chance to 3 boy students to speak. You can add your own points. First, Om, you can add your point. Then Ayush, then Vedant. So first, we'll start with Om. He left the meeting. Then Ayush. Ayush, please add what you want to say. Ma'am, but our eyes is also important, and blue rays of smartphone and a computer are very harmful to our eyes. Okay. Okay, yes, you can switch off your mic. Very good. The next, yes, Om. I took your name, but you left the meeting. Yeah. Yes, ma'am. Please tell. It online learning can be difficult as in discipline. Discipline involves practice. Discipline, what? I lost. The last word was not audible. Involves practice. Requires practice. Okay, okay. So that was Om's opinion about indiscipline and discipline. And the next, Vedant, please add your opinion. Ma'am, as Prarthana said that during offline class there is lot of disturbance, but I don't agree with it because when my online classes are going in school, some students keep their mic on and disturb the class. This can also happen. Okay, very good. It was a nice Such point. cases And are there. yes, correct. So it went in the flow. It was a nice flow that what Prarthana added and what you added. Perfect. Next, Jai, do you want to add in respect to this, with respect to this, discipline or indiscipline? Yes, please add your point. Ma'am, teacher can take any action on some disturbance in class, but in online class teacher can't take any disturbance, any action on disturbance. Okay, very good. So Jai's point of view is that teacher can control the noise or any indiscipline in offline mode, but there is nothing in teacher's hand when tuitions are going on with online mode. ओके, आता बॉईज ना 2 मिनिटं थांबा जरा. आता गर्ल्स पैकी कोणी ह्याला काही आर्ग्यू करेल का ह्या लाईन मध्ये, की तुमचं म्हणणं असं, गर्ल्सचं म्हणणं असं होतं की डिसिप्लिन जास्ती चांगली ऑनलाईन क्लासमध्ये होतीये. त्याच्यावर मुलांनी असं सांगितलंय आता आपल्याला की जरी मुद्दा असला तरी बऱ्याच वेळेला असं बघितलं जातं की स्टुडंट्स त्यांचे. येस नंदिनी, प्लीज कंटिन्यू. येस नंदिनी. Ma'am, in offline class teacher can control it. In online class also teacher can control, because it is in teacher's hand that he or she can remove that student from the meeting, and from this Yes, very good. it get disciplined. And in offline class if teacher removes them, then also they make indiscipline in the class. Perfect. Nandini, your point was very nice and it was again in the flow. Very nicely spoken. Very good, Nandini. Next, Atharva. I'll give first Atharva chance and then Vedant. So first, Atharva, please speak. But for teacher not possible to remove to many students, they which make noise in class. Okay, very good, Atharva. If there is 1 student or 2 students are misbehaving, teacher can remove that particular student from the meeting or can mute his or her mic, that is student's mic. But what if out of 18,
17 students are misbehaving, then what can teacher do? That was Atharva's point. So now next, Vedant, please add your point with disadvantages and then we will move on to goals. Ma'am, Atharva is right. Means, ma'am can't remove on. Means, if she, she will concentrate on teaching or she will keep on leaving the class. Means, removing of the Removing the students. student from the class. Yeah. Okay. Very good. So that was Vedant's point. Prarthana, yes, please speak. Teacher can remove, teacher can complain their parents about their misbehavior in the class or directly complain the subject teacher about it or the class teacher. Okay. So the teacher has right to speak to parents that the student is misbehaving or your child is misbehaving. Very good. So that was the point added by Prarthana. ओके आता मला सारखी सारखी तीच नावं दिसायला लागली आहेत. अथर्व, जय, वेदांत, द्विजेश. येस, द्विजेश, प्लीज स्पीक. Ma'am, the teacher can also complain the parents on the open houses or parent teachers meeting. Okay, so this can all again very good In point particular by class. Dvijesh. Yes, your point is right. द्विजेशचा मुद्दा पण बरोबर आहे की जसं तुम्ही आता म्हणलात की जसं प्रार्थनाने ऍड केलं होतं त्याला. बर, आता नंदिनी, भैरवी. नंदिनी 2 मिनिट थांबा, आधी आपण भैरवीला बोलू देऊया, मग तुझं घेऊया. भैरवी, प्लीज स्पीक. Yes, ma'am. I think in online lectures, violence can be controlled, which in classes students fight among themselves, then parents come to complain, and all these things can be controlled in the online lectures. Perfect, very good. She added a new point that the fighting between students can be stopped with the use of online classes. Nandini, what you wanted to speak? Nandini, please add your point also. Ma'am, when offline classes goes on, when teacher tells to students that call your parents, I want to complain. Sometimes the student didn't call their parents, but in online classes, the parents are also in direct contact with teachers, so the teachers can directly tell to their parents that they are misbehaving. Perfect, very good, Nandini. So that was Nandini's point, and now ओम आणि वेदांत अशी 2 नावं आलेली आहेत. मग अशी अथर्व पण होता लिस्ट मध्ये. सो ओम प्लीज, परत ओमने मीटिंग लीव केली. ओके, वेदांत तू बोलायच्या आधी एकदा मी अथर्वला चान्स देते कारण त्याचं आधी नाव वर येऊन गेलं. सो अथर्व, देन ओम अँड देन वेदांत. अथर्व, प्लीज स्पीक. But some students off their mics and camera and they are not attending the class. Attend the class. Very good. So now Atharva added a new point. No problem, Om. Yes, you can speak now. At school, students learn how to make friends, be patient, get rid of disappointment, and especially to compete. ओके, सो 2 मिनिटासाठी आपण तुझा पॉइंट थोडंसं बाजूला ठेवूया कारण हा थोडा वेगळा होता. हा, आपण डिसिप्लिन इनडिसिप्लिन ह्याच्याबद्दल बोलत होतो. सो त्यामध्ये आपला थोडासा पॉइंट वेगळा झाला. आधी आपण वेदांतचं ऐकूया, मग विजय, येस यू कॅन कंटिन्यू. वेदांतचं होऊ दे, मग आय गिव्ह चान्स टू यू अँड देन विल टेक गर्ल्स ओपिनियन्स ऑन युअर ऑल पॉइंट्स. ओके, सो फर्स्ट Vedant, please speak what you wanted to say. Ma'am, I want to say that maybe we can't go to school because of online classes. But if we don't go to school, we can't share our thoughts to our friends and can't open our heart to each other and can't make a contact, means friendly contact, and fighting maybe take place. But this is a part of life which help to contact with each other and makes us good friends. Means I'm not saying that fight is so much fight big that blood comes in, but little bit fight is okay. Okay, very good. So Nandini, what you said that fighting can be avoided by online classes, and Vedant now added that a little bit of fighting is also necessary to make your friendship stronger. That is also a valid point. When you fight, you get to know that yes, this
person is important in my life. I'm not talking with that person and I'm feeling something new in my life. That is not important or that is not good. Okay, yes. First द्विजेश, त्याच्यानंतर दोन्ही मुलींचं नाव घेऊया. Ma'am, about discipline, in online classes, the students talk each other in the chat. If a teacher doesn't know anything about some particular app, educational app, so the students take uh, Yes, your voice was not clear in between. the student, ma'am, what's if a teacher doesn't know anything about the app, the student is fayda. Okay. Advantage, yes. Sorry, ma'am. Yes. Okay, no problem. So it was like you wanted to say that if teacher is not sure about something, student Googles that thing and then is it like that, or students keep on chatting on WhatsApp or Facebook and teacher doesn't know whether the student is attentive or not? Yes, ma'am. Which one of these two? This second one? Yes, ma'am. Second. Okay, very good. So Dvijesh wanted to add that whether it is not visible in discipline or discipline, that the student keeps on chatting on some online modes or some social media, the student is chatting or talking with friends and the teacher is not aware of this fact that actually they are talking. Teacher thinks that students are attentive in the lecture because their name is there in the list, in attendance list, right? Yes, Kadambari, just give me a moment. First Nandini, Lavanya, and then I'll give chance to Kadambari. So first Lavanya, पहिले तू बोल, त्याच्यानंतर मी नंदिनीला बोलायला देते. Lavanya, Okay, please. ma'am. Yes. Online classes provides you notes and resources anywhere, anytime you need. ओके, सो आता हाई पॉइंट थोडासा ऍडव्हान्टेज डिसएडव्हान्टेज पेक्षा वेगळा झाला की जेव्हा केव्हा हव्या तेव्हा आपल्याला नोट्स आयत्या मिळू शकतात, जे ऑफलाईन मोड पेक्षा जास्ती चांगले आहेत, आणि असं तुझं म्हणणं आहे. आणि आता नंदिनीचं म्हणणं ऐकून घेऊया आपण. नंदिनीला काय म्हणायचंय? Ma'am, in case of indiscipline in online class, but when teacher asks the question, if the student is not answering to that question, it means that he was not Yes, he was not attentive in the class. Means he was connecting to others. So that from that we get to know in the online classes. But in offline class, sometimes they talks from behind and from back the voice when comes. So front benches, when they hear, they can't hear the teachers what teacher properly. us. Okay, very good. So this was the point added by Nandini, that if teacher calls out student's name and if that student is not attentive, teacher will get to know that this person was not attentive in the lecture. ह्याच्यावर काही बॉईज कडे एक उत्तर आहे जे कॉमनली आता रिझन मिळू शकतं की मॅम नेटवर्क इश्यू होता त्याच्यामुळे मला कळलं नाही, राईट? स्टुडंट इवन दो द स्टुडंट, मी बॉईजच्या साईडनी बोलले हे नंदिनी, की जरी स्टुडंट अटेंटिव्ह नव्हता असं जर टीचरला वाटलं तर स्टुडंट तिकडनं सांगून टाकतो लगेचच की मॅम नेटवर्कचा इश्यू होता. ओके, दिस कॅनॉट हॅपन इन ऑफलाईन मोड. येस, नाव झालेलं आता नंदिनी आणि लावण्याचं झालंय. कादंबरी, यू कॅन ऍड युअर नेक्स्ट पॉइंट अँड देन वी विल स्टॉप दिस डिबेट. आपण एक शेवटचं कन्क्लुजन काढायचंय त्याच्यावरून. कादंबरी, प्लीज स्पीक. Ma'am, I have new point. Because of online class, we can decrease air pollution, which is polluted by a school bus. Okay, so hey, this is about pollution, traffic, and all these things that happened. You also have one more point. Okay, Vedant, please speak. Ma'am, people say that online class is good, but I think that our India is a developing country. It is not yet developed. Means economic power has also a little contribution. Means everyone does not have enough money to purchase
laptops or mobile phones or tablets. Yes, very good. So Maybe sometimes मित्रांनो, prime minister knew so that the government helped, but government did not know every people in the country, na. येस, So करेक्ट that's करेक्ट. also point. ओके, आता मी इथे गर्ल्सच्या साईडनी एक पॉइंट ऍड करेन की सपोज स्कूलचं इन्फ्रास्ट्रक्चर, right? Infrastructure of school, maintenance of the school that is needed. Instead of that, if school decides to give smartphones to every student or their parents and then starts working on it, the money that was spent for maintaining the infrastructure is spent now on cell phones. Okay, this point I added in line with girls. Advantagesच्या पॉइंट मध्ये मी हा पॉइंट ऍड करते. तर ह्याला काही आहे का कोणाकडे आन्सर? ओके, ठीक आहे, बऱ्याच लोकांकडे आन्सर आहे, बऱ्याच मुलांकडे आन्सर्स आहेत. व्हेरी गुड, इट वॉज रिअली व्हेरी नाईस. सगळ्यांनी व्यवस्थित पार्टिसिपेट केलं. ज्यांनी पार्टिसिपेट केलं, वी विल स्टॉप दिस डिबेट राईट नाव, कारण आपल्याकडे टाइम कन्स्ट्रेंट आहेत ना. प्रत्येकाची नावं मी घेत राहीन आणि असा बराच वेळ जात राहील आपला. ओके, बट सगळ्यांनाच काहीतरी बोलायचं आहे. एकदा फक्त लास्ट चान्स आहे आता हा सगळ्यांसाठी. जेवढी लिस्टमध्ये माझ्या समोर नाव आहेत, आयुष, ओम, अथर्व, वेदांत आणि जय, ही 5 मुलं बोलतील फक्त पटापट आणि मग आपण थांबूया. जर कोणाचा पॉइंट सेम असेल कुठल्या मुलाला बोलायचा, तर लगेच चॅटबॉक्स मध्ये सेम असं लिहून टाका. येस, वी कॅन कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑल्सो. वी डोंट हॅव एनी प्रॉब्लेम विथ दॅट. फक्त मला एक डिबेटची शेवटची जी गोष्ट करायची असते ती ऍड करते, सांगते तुम्हाला की डिबेट बद्दल आपल्याला काय बोलायचं, म्हणजे कन्क्लुजन कसं काढतो आपण. जे ओपनिंगचे असतात, जसं आता या केसमध्ये, आपल्या केसमध्ये कादंबरीने काहीतरी एका पॉइंटनी स्टार्ट केलं, राईट, जो आपण पुढे पॉइंट कंटिन्यू केला. आता जेव्हा एंड होतोय तेव्हा प्रत्येकाने काही ना काही त्यांची मतं मांडली आहेत, राईट. आणि शेवटचा जो पार्ट असतो डिबेटचा, तो काय असतो की दोन्ही बद्दल एका कुठल्या तरी पर्सननी कन्क्लुडिंग स्टेटमेंट अबाउट ऍडव्हान्टेज अँड डिसएडव्हान्टेज ऑफ क्लास याचं मांडायचं असतं, ज्याच्यामध्ये ती व्यक्ती हे सांगेल की अख्ख्या डिबेटचं कन्क्लुजन काय झालं, की इज इट advantageous or disadvantageous, or we cannot differentiate between these as advantage or disadvantage. We can just say that in current situation online class is the best way for studying, but when all the things resume we can have offline classes or normal mode, or as and when required we can conduct online lectures. So हे जे शेवटी मी बोलले, दॅट वॉज द कन्क्लुजन ऑफ द डिबेट, की आपण काय म्हणू, हे कन्क्लुजन कोणाला तरी एकाला ऍड करायचं असतं. आता डिबेट मोस्टली कुठल्या केसेसमध्ये कधी घेतात, तर ऑनलाईन जेव्हा इंटरव्ह्यूज असतात, त्या काही इंटरव्ह्यूची ही एक फेज असते. ओके, इंटरव्ह्यू मध्ये काय होतं की एक माणूस प्रश्न विचारत असतो आणि दुसरा समोरच्याला काहीतरी सांगत असतो. येस, सोसायटी मीटिंग ऑल्सो. बट इथे काय होतंय की आता एक इंटरव्ह्युअर आहे, तो प्रश्न विचारतो, समोरचा सांगतो. डिबेटमध्ये काय होतं, जो कॅन्डिडेट असेल, ज्याला कंपनीला हायर करायचं असेल किंवा कॉलेजला त्याचा पुढचा कॅन्डिडेट म्हणून, स्टुडंट म्हणून घ्यायचं असेल, तर तेव्हा काय पॉइंट ऑफ व्ह्यूनी बघितलं जातं, तर एक म्हणजे हाऊ वेल यू स्पीक, युअर इंग्लिश ग्रामर, युअर स्पीकिंग ॲबिलिटी, युअर कॉन्फिडन्स अबाउट युअर पॉइंट. आता इथे काही गोष्टीत असंही असू शकेल की मला मुलांचा पॉइंट पटतोय, त्यांचं डिसएडव्हान्टेज जे आहे ते मला पटतंय, जे ते सांगतायत ते, बट आय एम कंपेल्ड टू टॉक अबाउट ॲडव्हान्टेजेस, तर मी माझा मुद्दा किती क्लिअरली मांडतीये. ओके, सो हा पॉइंट ऑफ व्ह्यू एक चेक केला जातो की तुम्ही जी लँग्वेज यूज करताय त्याचं ग्रामर तुम्ही कसं वापरताय, तुमचा बोलण्यातला कॉन्फिडन्स कसा आहे, आणि तुमचा जो पॉइंट आहे तो किती व्हॅलिड आहे, समोरच्याच्या इन लाईन तो पॉइंट आहे की नाही. म्हणजे तुम्हाला जेव्हा समोरच्याचा पॉइंट कळेल तेव्हाच तुम्ही तुमचा पॉइंट ऍड करणार, राईट. सो त्याच्यावरून काय कळतं की बोललेलं किती पटकन समोरच्याला कळतंय, त्या कॅन्डिडेटला किती पटकन कळतंय, आणि त्याच्यावर त्याची रिॲक्शन कशी आहे, हे जे जजेस असतात डिबेटसाठी ते बघत असतात. आता आपल्याला काय होतंय, फक्त सगळ्यांचे आवाज ऐकू येत आहेत. जेव्हा ऍक्च्युअल डिबेट चालू असतं समोर लोक असतात, त्यामुळे बॉडी लँग्वेज ऑल्सो मॅटर्स, की तुम्ही कसे हातवारे करताय, काय समोरच्यावर धावून जाताय भांडतोय म्हणून, ऍक्च्युअल फायटिंग मध्ये एंटर करताय, की त्याच्यात सुद्धा तुमच्या अपोजिट पॉइंट असताना सुद्धा तुम्ही
रागावर किंवा तुमच्या बोलण्यावर कंट्रोल ठेवून त्याला पटवून द्यायचा प्रयत्न करताय. ओके, सो हे सगळे पॉइंट्स आपल्याला डिबेटमध्ये कव्हर करायचे असतात. नॉट ओनली इंग्लिश स्पीकिंग ह्याच्यावर फक्त फोकस नसतो की आपलं ग्रामर कसं आहे, दॅट इज प्रायमरी थिंग की ग्रामर कसं आहे. सेकंड थिंग इज हाऊ वेल यू हॅव अंडरस्टूड द टॉपिक. राईट, आता ऑनलाईन क्लास हा एकदम सोपा टॉपिक होता की त्याचे ऍडव्हान्टेज डिसएडव्हान्टेज म्हणजे ऑनलाईन क्लासमध्ये काय होतं काय नाही याच्याबद्दल आपल्याला बोलायचं होतं. असंच कुठलेही टॉपिक्स असू शकतात. समज सायन्सशी रिलेटेड गेल्यात सायंटिफिक टॉपिक्स असतात, मार्केटमधल्या काही असेल म्हणजे फार्मास्युटिकल कंपनीचं प्रॉफिट लॉस यांच्याबद्दल काही बोलायचं असेल त्याच्याशी रिलेटेड असतात. सो डिबेटचे टॉपिक वेगवेगळे असू शकतात ज्याच्यामध्ये 2 मतं आहेत आणि प्रत्येकाला आपलं मत मांडायचं असतं. ओके, अँड द फायनल इज कन्क्लुजन जो देतो त्याच्यावरती सगळ्यात जास्ती मोठी रिस्पॉन्सिबिलिटी असते. असं नाहीये की जो कन्क्लुजन देतो त्याचं सगळ्यात चांगलं मत त्याच्याबद्दल राहील जजेसचं किंवा इंटरव्ह्युअरचं. ओके, बट कन्क्लुजन देणं इज ऑलवेज ॲडवायजेबल की आपण कन्क्लूड करू शकतोय जे काही डिस्कशन झालं ते तेवढ्याशा वेळात आपल्याला कळलं आहे. मागच्या 10 मिनिटामध्ये सगळी लोक काय काय बोलली त्याचं जिस्ट आपण काढू शकतोय. इज अगेन अ गुड ॲबिलिटी ऑफ दॅट पर्सन. ओके, सो आता नेक्स्ट डिबेटमध्ये आपल्याला कोणीतरी एक किंवा तुमच्यापैकी आता आपण प्रॅक्टिसेस घेणार आहे त्यामुळे 4-5 जणांनी जरी कन्क्लुजन सांगितलं तरी चालेल. आज फर्स्ट डिबेट होतं. इट वॉज रिअली व्हेरी नाईस. ज्यांनी पार्टिसिपेट केलं खूप व्यवस्थित केलं, व्यवस्थित बोललात. मला खरंच आवडलं. तुमचे पॉइंट्स खूप छान लाईनमध्ये सुद्धा गेले. इंग्लिश पण चांगलं होतं. प्रत्येकाने कोणी मराठीमध्ये बोललंय किंवा काहीतरी ऍड करायचं म्हणून केलंय असं नाही, व्यवस्थित इंग्लिश बोललात तुम्ही. सो दॅट वॉज अगेन व्हेरी नाईस. पहिले थोडं असं झालं की एक सेंटेन्स बोलून माईक स्विच ऑफ होत होता, बट पुढे ती इम्प्रूव्हमेंट झाली. अशीच इम्प्रूव्हमेंट आपल्याला पुढे करत राहायची की इन्स्टेड ऑफ ओनली स्पीकिंग इन 1 लाईन वी कॅन ऍड अ कम्प्लीट सेंटेन्स ऑफ ॲटलिस्ट 2 to 3 lines. Okay, so that the interviewer will understand that yes, you can speak this language and you can add your point in this language. Language is also important while speaking or in case of debates. So ज्यांनी पार्टिसिपेट केलं व्यवस्थित नावं देऊन, इट वॉज रिअली नाईस, इट वॉज रिअली गुड. आणि आता कोणी ज्यांनी पार्टिसिपेट नाही केलेलं त्यांनी हे लक्षात ठेवा की this is not good, that it is for you, the activity is not for me, it's for you, you have to participate. थोडंसं चुकलं वर खाली झालं नो प्रॉब्लेम. आपण सगळेच इथे शिकायला आलोय. सगळे जे काही बोलतात ते अगदी परफेक्टच आहे, बरोबरच आहे असं काहीच नाहीये. सगळ्यांच्या थोड्या ना थोड्या चुका होणारच. त्या चुका समजून आपल्याला पुढे टाळायच्या आहेत. जर तुम्ही बोललाच नाही तर तुमची काय चूक होतीये हे तुम्हालाही कळणार नाही, मलाही कळणार नाही. ओके, सो फॉर एव्हरीवन it is important to participate, whether it is correct or wrong or whatever it is. लँग्वेजचा प्रॉब्लेम असू दे, बोलण्यातला कॉन्फिडन्स नसू दे किंवा काहीही असू दे, आपल्याला बेसिक पासूनच सुरुवात करायची. प्रत्येक जण नवीन आहे, प्रत्येकाला नवीन पद्धतीनेच आपण पहिल्यांदाच बोलतोय असंच बोलायचंय आणि पुढे पुढे हळूहळू इम्प्रूव्हमेंट करत जायची. ओके, सो व्हेरी गुड. इट वॉज अ नाईस डिबेट. नेक्स्ट, तन्वी, डू यू वॉन्ट टू स्पीक ऑन एनी टॉपिक ऑफ युअर चॉईस? Is she there in the lecture? Yes, Tanvi, you are there in the lecture. You have 2 minutes. Yes, please start. My topic is laughter is the best medicine. Today's life is very stressful and it needs stamina and composed mind to do the work. So we also must laugh and spend at least some time for ourselves and others. For this, we can choose the path of laughter. Laughter is the best medicine. It is kind of exercise which relax all organs of the body. It greatly helps a lot. It relaxes our mind and the body. It relieves our pain, reduces our depression, relieves us from worries, tension, anger, and stressful all life. And brings freshness and happiness in our life. The benefit of laughter are unending. Thank you. Yes, very good. Thank you, Tanvi. It was nice. But तू डिबेट मध्ये पार्टिसिपेट नाही केलं त्यामुळे तू टॉपिक सिलेक्ट करत बसली आणि तयारी करत बसली, त्याची नो प्रॉब्लेम.
नेक्स्ट टाइम लक्षात ठेव, डिबेटमध्ये सुद्धा पार्टिसिपेट करायचं. ओके. डिबेटमुळे काय होईल माहितीये, आपले आता रीडिंग आपल्याला सगळ्यांना व्यवस्थित जमतंय. स्पीकिंग तुम्हाला टाइम दिला जातोय आणि तुम्हाला टॉपिक तयार करायचा आहे. डिबेटमध्ये काय होतंय, अननोन थिंग कोणतरी समोरचा बोलतोय आणि त्याच्यावरती रिॲक्शन द्यायची आहे, ती इंग्लिशमध्ये. सो ही एक वेगळी प्रॅक्टिस आपल्याला करायची आहे. ओके, व्हेरी गुड, परफेक्ट. सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चरला पण आपण डिबेट कंटिन्यू करू, आयदर ऑन दिस टॉपिक ऑर सम अदर टॉपिक. इट्स युअर कॉल की आपल्याला काय करायचंय, नेक्स्ट टॉपिक घ्यायचा आहे की हाच टॉपिक कंटिन्यू करायचा आहे, ते तुमच्या मतावर असेल कम्प्लिटली. आणि आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये पण थोडा वेळ डिबेट घेऊया. नेक्स्ट लेक्चरमध्ये ग्रामर होणार थोडंसं. ओके, पुढचा टॉपिक हवाय, वेदांतनी ऍड केलंय, आय गेस वेदांत, राईट? येस, वेदांतनीच ऍड केलंय की आपण एन्व्हायरमेंटवर घेऊया. सो सगळ्यांना चालणार आहे एन्व्हायरमेंट. पण एन्व्हायरमेंट बद्दल काय, अरे सोशल मीडिया आलं एक, अजून एक. ठीक आहे, आपण नेक्स्ट लेक्चरला डिसाईड करूया थोड्याशा वेळात की काय टॉपिक सिलेक्ट करायचं आणि त्याप्रमाणे कंटिन्यू करूया. ओके. सो मला तर डिबेट आवडलंय. व्हॉट वॉज युअर ओपिनियन? डिड यू लाईक टू स्पीक? तुम्हाला ज्या पद्धतीने गेलं आवडलं? एव्हरीवन हॅड अपॉर्च्युनिटी टू स्पीक. प्रत्येकाला असं वाटतंय की आपल्याला व्यवस्थित न्याय मिळाला बोलण्यासाठी, किंवा कोणाला असं वाटतंय की नाही मला कमी बोलायला मिळालं, असं काही झालेलं नाहीये. सो जर कोणाचं राहून गेलं असेल थोडंसं, तर आपण नेक्स्ट लेक्चरला त्याला अपॉर्च्युनिटी देणार आहे. व्हेरी गुड. सो इट इज इम्पॉर्टंट दॅट यू आर गोइंग टू एन्जॉय these lectures. Yeah, very good. So for now we'll stop the lecture. Thank you and bye. Deep, you also did not participate.